अमेरिका और भारत के मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान का जिक्र यक तरफा और गुमराहकुन करार। पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका के मुश्तरका एलामिये को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान का जिक्र यक तरफा, गुमराहकुन और मुकम्मल तौर पर सफारती अखलाकियात के खिलाफ था। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के ताउन को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान को जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी भारत के हवाले करने पर भी सख्त तशवीश है। तर्जुमान ने सऊदी अरब में फलस्तीनियों को बसाने से मुताल्लिक इसराइली वजीर आजम के बयान को भी मुस्तरद कर दिया। We consider the Pakistan-specific reference in the Indo-US joint statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. We are surprised that the reference has been added to the joint statement, notwithstanding Pakistan's counter-terrorism cooperation with the United States. The joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region, and to take cognizance of the grim human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India. Such steps accentuate military imbalances in the region and undermine strategic stability. Pakistan strongly condemns in unequivocal terms the recent statement by Israeli Prime Minister suggesting that the Palestinian people should establish a state in Saudi Arabia. The remarks by Israel are irresponsible, provocative, and thoughtless. Pakistan stands in solidarity with the Kingdom of Saudi Arabia, and any attempt to undermine Saudi Arabia's unwavering position and misrepresentation of its commitment to the Palestinian cause is deeply regrettable.